Welcome to Market Mantra, a program in which we give you a complete update on the economic news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor Nikhil Kumar Shukla. नमस्कार। मार्केट मंत्र में आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम में हम आपके लिए देश और दुनिया की चुनी हुई आर्थिक, कारोबारी और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरें लेकर हाजिर हैं और हमारे साथ तमाम खबरों पर चर्चा के लिए आमंत्रित है स्टूडियो में वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ एसपी शर्मा जी। एसपी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया। और सबसे पहले हेडलाइंस के साथ में है अर्जुन। Domestic equity benchmark indices end in the green. Sensex closes at 76,811, Nifty at 23,399. Retail inflation eases to a 12-month low in May 2024, says Ministry of Statistics and Program Implementation data. And US Federal Reserve Bank maintains key policy rate. घरेलू शेयर बाजार हरे निशान के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 76,811 अंक पर और निफ्टी 23,399 अंक पर पहुंचकर बंद हुआ। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार खुदरा महंगाई दर मई 2024 के लिए पिछले 12 महीनों में सबसे कम और अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक ने प्रमुख नीति दरों को बनाए रखा। शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की, नजर डालते हैं शेयर बाजार पर। भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स और निफ्टी आज हरे निशान के साथ बंद हुए। निम्न स्तर पर वैश्विक संकेतों का सकारात्मक असर देखा गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक आज 204 अंक यानी 0.27% के उछाल के साथ 76,811 अंक पर जाकर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 76 अंक यानी कि 0.33% ऊपर आकर 23,399 पर पहुंच गया। बीएससी के विस्तृत बाजार में आज मिड कैप में 0.79% की बढ़त देखी गई और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.89% का लाभ दर्ज हुआ। India's equity benchmark indices ended in the green today amidst a mixed global queue. Sensex rose by 204 points, or 0.27% to close at 76,811. Nifty gained by 76 points, or 0.33% to settle at 23,399. In the broader market at the Bombay Stock Exchange, the mid-cap index was up by 0.79% and the small-cap index climbed 0.89%. In the Sensex pack of 30 companies, 20 registered gains. The top three gainers today were Mahindra & Mahindra, which gained by 2.73%, Titan 2.68%, and Larsen & Toubro by 2.06%. Conversely, the three major laggards were Hindustan Unilever, which fell by 1.64%, ICICI Bank fell by 1.10%, and Axis Bank fell by 0.99%. In the sectoral indices, the BSE 15 out of the 20 sectors logged gains, while 4 witnessed losses, and metal sector ended near to flat. The top three gainers were Realty, which gained by 2.15%, Capital Goods 2.05%, and Consumer Durables 2.01%. Whereas Telecom fell by 0.89% and FMCG fell by 0.46%, were the only two laggards. The overall market breadth was positive. Out of 3,984 companies, the shares of 2,345 companies advanced, 1,539 companies declined, and 100 remained unchanged. Let's have a look at how the rupee performed against the US dollar, Nikhil. जी हाँ, रुपए पे अगर नजर डालें तो रुपए में आपको बता दें कि विदेशी मुद्रा बाजार में आज अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 7 पैसे की गिरावट के साथ 83 रुपए 55 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। विश्व की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स अंतरदिवसीय कारोबार में 0.31% की बढ़त के साथ 104.95 पर कारोबार कर रहा था। एसपी, आज अगर बाजार पर नजर डालें तो हरियाली हमें नजर आई और कल भी शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ था। आज सुबह से हम तेजी देख रहे थे और सेंसेक्स अपने रिकॉर्ड स्तर से बहुत थोड़ा ही दूर रहा है। और एक चीज देखें तो आजकल रिकॉर्ड टूटना एक बड़ी आम सी बात हो गई है। फिलहाल निवेशकों का रुख कैसा होना चाहिए? देखिए, बहुत हरियाली है और आने वाले टाइम में मॉनसून के आने से और भी हरियाली हो सकती है और ये हरियाली हम समझते हैं कि बरकरार रहेगी। फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है। जैसे हमने देखा कि हमारा जीडीपी है उसने ही बहुत बड़ा सरप्राइज दिया था कि 8.2% पे जो ग्रो किया लास्ट ईयर में,
और आने वाले टाइम में फिर ऐसे ही संभावनाएं हैं। अभी अप्रैल का जो डेटा आए हैं वो बहुत बढ़िया जीएसटी नंबर्स हैं, बढ़िया हमारे आईआईपी नंबर्स हैं, कोर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, बैंक क्रेडिट अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, तो ऑल दी फंडामेंटल्स आर सपोर्टिंग द इकोनॉमिक मोमेंटम, जिससे कि हरियाली जैसे आपने बताया तो आने वाले टाइम में उम्मीद है कि ये हरियाली बरकरार रहेगी, क्योंकि हमारे जो फंडामेंटल्स हैं, हमारी जो सपोर्ट है इकोनॉमी को, जो हमारे इंडिकेटर्स हैं, दोज इंडिकेटर्स आर परफॉर्मिंग वेरी वेल. Dr. Sharma, despite the market going up by more than 200 points today, and as Mike Weinker said, fresh highs as far as the market is concerned, both the Sensex and the Nifty, FIIs and DIIs, the institutional buyers and sellers in the market, were net sellers today. You had FIIs who were the net sellers to the tune of 3,000 crore rupees. You had DIIs who were the net sellers to the tune of 554 crore rupees. Despite both of them being net sellers, the market gained by 200 points. Volatility index is showing VIX has actually come down by 6%, 6.5% in fact, 6.3%. And yet we're seeing a gain in the market. Who did the buying today? Yes, Arjun, very good question, because markets are now more stable as compared with the 15 days ago, because now the fundamentals and all the developments are supporting the market. And the second question, like the FII are selling, they are booking the profit, not they are not exiting the market, but sometimes they book the profit, and because at certain point of time when the markets are going up, then you have to book profit at some certain point of time, and market support is coming from the retail segment actually, because the retailers are more aggressive in the market. They are believing on the Indian story, they are believing on the India's growth trajectory and the fundamentals of India's various segments. That's why the market support is majorly coming from the domestic front, not from the foreign buyers. But still they will remain invested because they are believing on India's story, but sometimes they book their profits, and that is natural that at some certain point of time you have to book your profits. Dr. Sharma, you believe there's a shift now from investing in the FNO market today, of course, being the expiry day for the weekly FNO, a shift from FNO to the cash market. You feel that the retail participation has actually gone up right now? Yes, because Arjun, 15 days ago there was a lot of uncertainty and volatility in the market. Sometimes they exit from the cash market and invest in the FNO to save their losses. And gain more from the market, but now the stability is there, markets are stabilizing, so now again they are shifting from the future and option market to the cash market. Actually, this is happening this is churning in the cash market and the future market and the option market. एसपी स्टॉक मार्केट में जो लगातार हम तेजी देख रहे हैं, कई सारे उसके कारण है, कई सारी गुड न्यूज है भारत के लिए, लेकिन पर्टिकुलर सेक्टर की हम बात करें तो आईटी और रियलिटी शेयर्स जो हैं वो मजबूती के पीछे एक बड़े कारण माने गए हैं. तो ऐसे में मल्टी बैगर जो शेयर्स है उनका हाल अच्छा रहने का अनुमान लगाया जा सकता है आने वाले कुछ दिनों तक? जी बिल्कुल, क्योंकि मैं किसी एक सेगमेंट में या एक सेक्टर के ऊपर बहुत ज्यादा मैं तो पूरी इंडिया की स्टोरी के ऊपर बोले. मैं समझता हूं कि इंडिया का हर एक सेक्टर, हर एक जो सेगमेंट है वो ही प्रॉमिसिंग है. आप देखेंगे कि मार्केट में एक ब्रॉड बेस्ड जो उछाल आया है, जो एक बुल रन चला, जो पीछे हमने एक साल में बहुत अच्छा गेन किया, तो सभी सेक्टर्स में जो है ग्रोथ आई है. कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जो कि बहुत ही हम कहें कि इसमें गिरावट है, बट थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव रहता है. कई बार प्रॉफिट बुकिंग आती है, समटाइम्स चर्निंग आल्सो हैपन, लोग एक शेयर से निकल के दूसरे में जाते हैं, एक सेक्टर से निकल के दूसरे में जाते हैं, तो ऐसा तो चलता है. लेकिन ओवरऑल स्टोरी इज वेरी वेरी प्रॉमिसिंग, एंड वी आर द, as everybody knows now, okay, we are the fastest moving economy, not only in the advanced economies but in the emerging markets also we are the fastest. And post covid growth, अगर हम पीछे 3 साल का अनुमान देखें, जो हमारे जो जीडीपी के आंकड़े हैं, अगर उनको हम एवरेज करें तो 8% से ऊपर का ग्रोथ हमने ऑन एन एवरेज हासिल किया है पोस्ट कोविड में. शायद ही कोई ऐसी इकोनॉमी होगी जो पहले भी कंसिस्टेंटली इतना अच्छा ग्रोथ रेट जो हासिल कर सकती है. एसपी, हमारे देश में एक निवेशक का वर्ग ऐसा भी है जो बहुत ही सेफ साइड में रह करके शेयर मार्केट में निवेश करता है, खासतौर पे पीएसयू या भी रेलवे के सेक्टर्स में भी काफी देखा गया है कि संख्या बहुत बढ़ी है, क्वांटिटी बहुत बढ़ गई है. तो इन निवेशकों के लिए क्या ये मतलब सही समय है कि अपना शिफ्ट करें, थोड़ा सा जो उनका बिहेवियर है कहीं और जा करके पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि उनको
ट्रस्ट करना पड़ेगा, बिलीव करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो देखें कि थोड़े समय में कुछ नहीं मिलता है, जी, जो मार्केट्स हैं वो एक लॉन्ग टर्म ट्रैजेक्टरी में जाके बेनिफिट देती हैं। अगर सोचे कि हमें आज पीएसयू में इन्वेस्ट करके 10 दिन के बाद हमें प्रॉफिट मिल जाएगा, या फिर जो ब्लू चिप्स हैं उसमें इन्वेस्ट करके हमें प्रॉफिट मिले, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। हो सकता है 10 दिन में कुछ ऐसा करेक्शन आ जाए तो उनको उसमें सेटबैक हो। तो एक लॉन्ग टर्म स्टोरी में उनको इन्वेस्ट करना चाहिए, ना कि एक सेगमेंट में। दे शुड इन्वेस्ट इन दी लॉन्ग टर्म स्टोरी, इंडिया स्टोरी, उसी में उनको बेनिफिट होगा। अगर वो ऐसा एक जिसको मैं स्पेकुलेशन करूंगा कि भी इस सेक्टर में बड़ा अच्छा चलेगा, उसमें निकल के फिर उसमें चले गए, देन दे विल बी इन लॉस एक्चुअली। Capital goods actually went up, and typically investors take a long position on capital goods because you're looking at something that benefits manufacturing. There is a lot of buying in capital goods because you're able to earn income from it. Typically, factory activity is associated with that. Will you link that to the India growth story? Yes, definitely, because capital goods sector is very strong because demand trajectory is happening. This is indicating the aggregate demand in the economy. Now the government is investing, government's infrastructure investments, the capital investments are at high. These investments grew from 1.9 lakh crore to more than 11 lakh crore during the last 10 years. That is a tremendous increase, 7-8 times increase in the capital investments in India. So that's why the story remains intact. That is supporting the growth, and that is creating the aggregate demand in the economy, providing the employment to the skilled, unskilled, and semi-skilled workforce, and creating income levels to the next level, like the people's incomes are also increasing. So I believe the capital segment, because now our vision is to become the Viksit Bharat by 2047. So the capital story will remain intact, not only for the year or 2 year or decade, but in the next many decades, our capital investments will be on high, as we have to invest more and more in our infrastructure, state-of-the-art infrastructure, because now the focus was only on the larger cities. Now the shift will be on the tier 2 and tier 3 cities and the smart villages. Earlier we were developing the smart cities. Now Right. the shift will happen in the small towns and the small villages. They will also get the state-of-the-art infrastructure. So capital goods story, capital investments will remain intact, and support the Indian economy to move forward and to become more and more strong in the international arena. Dr. Sharma, typically the economic calendar is able to move the market. Like, for instance, we have the CPI data, which we will read out to our listeners in a short while. And then, of course, you have international news also, which has a bearing on how the stock market is going to perform. Are there any, in the next 6 months, do you see under the Viksit Bharat program, do you see any major investment by the government, public spending in infra projects, which will again drive markets? Yes, we are looking forward for the development of the core infrastructure, like the investments in the core infra segments like mining and the oil segment and the renewable energy. All these things will get more and more funds, and to move forward, and we have to develop our basic infrastructure to create capacities for the manufacturing sector and for the people actually. इसमें आप मार्केट को बड़ा बारीकी से देखते हैं, उस पर नजर रखते हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप की अगर हम बात करें तो जैसे कछुए की चाल होती, बड़े आराम आराम से बढ़ते जाना और अपनी मंजिल तक पहुंचना। बीच में भी जो भी उतार चढ़ाव आए, उसके बावजूद मिड कैप और स्मॉल कैप अपना एक अच्छा परफॉर्मेंस देते रहे हैं। इसके पीछे किन कारणों को हम समझें, और साथ ही एफआईआई ने जो खरीदारी भी की है, मतलब बिग वाली भी खरीदारी, सारी चीजें उसमें की है, लेकिन उसके बाद भी हम उसमें एक हरे निशान वाला रुख ही देख रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से FIIs के लिए अभी हमारा मार्केट्स के लिए हमारा रिटेलर एक सपोर्ट है, उसी तरीके से जो हमारी स्टॉक मार्केट है उसके लिए हमारे जो छोटे मझोले शेयर्स हैं वो एक बहुत बड़ी सपोर्ट है। वो मार्केट को अच्छा मोमेंटम देते हैं। वो क्यों? क्योंकि हमारी जो ग्रोथ स्टोरी है, अभी हमारा जो फोकस है, आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा MSMEs के ऊपर बहुत फोकस है। हमारे पास लगभग 6 करोड़ से ज्यादा MSMEs हैं, जो लगभग कोई 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार देती है। तो इसके लिए बहुत रिफॉर्म्स हुई हैं, क्योंकि 90% तो हमारा जो कंपनीज है वो MSMEs है, 90% से भी ज्यादा। तो जो फोकस है सरकार का, एक हैंड होल्डिंग जो दी सरकार ने पिछले 4-5 साल में, पर्टिकुलरली कोरोना के बाद जो एक सपोर्ट दी, उसके बाद इनमें एक बहुत अच्छा मोमेंटम बना है, और इनकी जो
पॉलिसीज थी, जो सपोर्टिव पॉलिसीज, जब कोरोना फैला दुनिया भर में, तो सरकार ने जो छोटे मझोले बिजनेसेस थे उनके लिए बहुत अच्छे प्रयास किए और उनके लिए बहुत अच्छी पॉलिसीज, उनके लिए क्रेडिट फैसिलिटेशन और उनके लिए ईज ऑफ कंप्लाइंसेस। अगर आप देखेंगे पिछले 3-4 साल में ही 40,000 से ज्यादा ऐसे कंप्लाइंसेस रिमूव हुए हैं जो कि उनके लिए बॉटलनेक्स थे, वो आगे नहीं बढ़ पाते थे। अभी एमएसएमईज की ग्रोथ है, जो अगर हम इंडिविजुअल कंपनी से बात करते हैं तो उनकी ग्रोथ 30, 40, 50% तक भी वो ग्रो करते हैं एक साल में, और इनके लिए और रिफॉर्म्स जारी रहेंगी आने वाले टाइम में। जो रिफॉर्म्स है वो मोमेंटम चलता रहेगा। दैट्स व्हाई द कंपनीज, जिनको हम मिड कैप्स बोलते हैं, उनके ऊपर काफी अच्छी स्टोरी बिल्ड हुई है, और उनका जो ग्रोथ मोमेंटम है, जो उनकी शीट्स हैं, बैलेंस शीट्स हैं, वो काफी स्ट्रांग है अभी आज के उसमें। जी। Let's move on to our headline story now on CPI inflation. Consumer Price Index based retail inflation eased to a one-year low of 4.75% in May 2024, according to the data released by the Ministry of Statistics and Program Implementation on Wednesday. Retail inflation was 4.83% in April 2024 and 4.31% in May 2023. There is a common feeling on the possibility of an interest rate cut if the food inflation remains moderate during the second half of the fiscal. According to the data released by NSO, inflation in the food basket was 8.69% in May, marginally down from 8.7% in April. According to the data, vegetable inflation dropped, but cereals and pulses inflation rose. On a sequential basis, food inflation rose at 0.73% month on month in May versus 0.74% in April. Food contributed 3.4 percentage points to the headline inflation. Core inflation, headline inflation minus inflation of food and fuel, eased to 3% in May from 3.2% in April 2024. Reduction in core inflation is mainly attributed to broad-based moderation across categories. On a sequential basis, core inflation eased to 0.26% month on month in May from 0.47% in the previous month. In the industrial growth front, encouraging signs are less because of a 3-month low of 5% in April, owing to below par performance of the manufacturing sector. So my question is twofold. One is, when you look at non-core inflation, where prices are variable, they're not fixed like in core inflation, we are seeing that food inflation is a cause for concern, including the base effect. So their prices have gone up, unfortunately, because of many reasons, including externalities from abroad, and on the inflation faced by businesses, because they are also procuring goods and services, and that is something they're affected by. How do you see this being resolved in the short to medium term so that wages are commensurate with prices? Yes, Arjun, definitely, because inflation, particularly the food inflation, is a major challenge at this juncture, because despite the high base effect and so many efforts, the food inflation is not coming down and remains sticky more than 8%. If we go by the numbers during the last 4-5 months, then the trajectory is very high and sticky, and remains adamant to the various measures, supply side measures. So going forward, I think the major chunk of inflation in the food basket is coming from the pulses, actually, where we have deficiency of I believe 3-4 million tons every year, and our demand is higher than the supply, though we import. But we have to strategize this import in advance. We should have buffer for a few months so that the price pressures are not coming immediately and the hoarding is not happening. So we have to stop 2-3 things. Firstly, we have to strategize the demand trajectory, because demand is increasing significantly. Demand increased from 17 million tons to 27-28 million tons during the last 10 years. So demand trajectory is expanding significantly with the rise in income levels and the rise in the economic environment and the progress in the GDP. So going forward, I think there must be a clear-cut strategy to create buffers for the at least 3-4 months, so that the price pressures are not coming immediately and impacting the trajectory of prices, and giving chance to the holders to push the prices artificially at the higher level.
So you see this conflict between demand side and supply Yes, yes, side because in terms of policy also. Despite the anticipation, we are not able to create equilibrium between the demand and supply. Though we import, but we have to import in advance and strategize our import so that we have buffer to meet the demand which happens immediately. What about substitutes in order to bring down prices? Do you think that that is something that is palatable to the Indian consumer? I think there is no substitute for the pulses because we have to grow, otherwise we have to import. So we have to motivate our farmers so that they are able to grow more and more pulses, though they have increased the production. Our production increased from 17-18 million tons to 27-28 million tons during the last 10 years. But still we have to go a long way to increase the production possibilities for the pulses. What about our quota system by which we are able to regulate imports and exports? Like China, for instance, they're able to source a lot of their raw materials from Africa, for instance, because of the investments abroad. Do you see the investments in agriculture abroad as a way forward so that supply side prices do Yes. come down, because you have more quantity to deal with? Yes, definitely, because we have to invest more in the agri infrastructure. Actually, we have to create cold storage facilities and the more connectivity with the supply chain, more strong supply chain, so that the hurdles are not there and the farm output is reaching at the consumer doorsteps immediately. एसपी अभी देश के औद्योगिक उत्पादन के जो आंकड़े हमें मिले उनमें ये देखा गया कि 5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जो अपने आप में एक अच्छा आंकड़ा है। और ये भी माना गया कि खनन और बिजली ऊर्जा से संबंधित जो क्षेत्र हैं उन्होंने इस प्रदर्शन को और बेहतर बनाया। कुछ देर पहले आपने एमएसएमई का जिक्र किया था। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि मेटल सेक्टर जो है वो इसमें कितना अपना मतलब उसका कितना हाथ है, कितना लाभ दे रहा है वो इन सारी चीजों को, और खासतौर पर औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाने में? जी बिल्कुल, मेटल में और स्टील में जितनी भी तेजी आती है वो पूरे जो उद्योग उत्पाद है उसको काफी अच्छा बूस्ट मिलता है। और जिस तरीके से हमने देखा है कि एमएसएमईज का सपोर्ट और एमएसएमईज की डिमांड और एमएसएमईज की प्रोडक्शन जो है वो काफी सालों से बहुत इंटैक्ट रही है। अभी भी रिफॉर्म्स और होंगी तो ये और ज्यादा अच्छे से कंट्रीब्यूट करेंगे। और आईआईपी नंबर्स जिस तरीके से आपने कि औद्योगिक जो विकास दर है, मैं बताना चाहूंगा कि मैन्युफैक्चरिंग में हमने काफी सालों के बाद लास्ट ईयर जो 23-24 का फाइनेंशियल ईयर था उसमें लगभग हमने 10% के आसपास की ग्रोथ हासिल की। 9.9% वाज द ग्रोथ रेट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग व्हिच हैज हैपेंड आफ्टर सो मेनी इयर्स। तो आने वाले टाइम में जो रिफॉर्म्स जो हमने मेक इन इंडिया से शुरू की 2014 में, तो उनके जो नतीजे हैं वो काफी विजिबल होने शुरू हो गए हैं कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग एक डबल डिजिट में ग्रो कर रही है। तो आने वाले टाइम में अगर हम इस ग्रोथ को मेंटेन कर लेते हैं विद द सपोर्ट ऑफ मेटल्स, विद द सपोर्ट ऑफ स्टील एंड कोर इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑल दीज एक्टिविटीज, तो हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग मोमेंटम है बहुत अच्छा रहेगा और मैन्युफैक्चरिंग का शेयर जो जीडीपी में वो भी इंक्रीज हो जाएगा। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। एशिया के अधिकतर शेयर बाजारों में आज मिला जुला रुख देखा गया। दक्षिण कोरिया के कॉस्पी और हांगकांग के हैंग सेंग सूचकांक में 0.97% का उछाल आया। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक 0.51% की तेजी के साथ बंद हुआ। वहीं दूसरी तरफ जापान के निक्केई सूचकांक में 0.40% की गिरावट दर्ज हुई और चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक 0.28% की सुस्ती के साथ बंद हुआ। यूरोप के तीनों प्रमुख बाजार आज लाल निशान के साथ कारोबार कर रहे थे। समाचार लिखे जाने तक फ्रांस का कैक 1.25% नीचे था और जर्मनी का डेक्स 1.10% के नुकसान में चल रहा था। वहीं लंदन का फुट्सी 100 0.48% गिरकर कारोबार कर रहा था। एसपी हमने देखा कि भारत का बाजार तो आज अच्छा दिखा, लेकिन यूरोप के बाजार आज लाल निशान के साथ कारोबार कर रहे हैं। क्या कारण हो सकता है? देखिए, जो यूरोप में, अमेरिका में आप देखेंगे कि काफी अभी जो ट्रबल्स हैं, जो ग्रोथ को लेके, जो मैन्युफैक्चरिंग को लेके, जो डिमांड को लेके, उनकी वजह से वहां पे जो सस्टेन्ड एक मोमेंटम होना चाहिए वो भी नहीं है। एंड दे आर प्रोन टू वेरियस जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स। जब भी कुछ जियोपॉलिटिकल में कुछ डेवलपमेंट्स होती हैं, कुछ डीपनिंग होती है, क्राइसिस होता है, या काफी कंट्रीज में भी वॉर लाइक सिचुएशन है, तो ये सारी चीजें इम्पैक्ट करती है। बट इंडिया का स्टोरी, इंडिया की जो रेजिलियंस है डिस्पाइट सो मेनी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स जो हमने पीछे 3 साल से देखी, 2021, 22, 23 में हमने जियोपॉलिटिक्स को बहुत गहराते हुए देखा, तो फिर भी हम उस लेवल पे ग्रो कर पाए। That is the great thing which has happened, and we totally decoupled from such kind of geopolitical distress. Do you feel that the Russia-Ukraine crisis playing out
across Europe, and coupled with anti-immigration policy of many European nations like Italy and UK and Poland, you feel that all of this is contributing to market sentiment in terms of consumption? Yes, definitely. Because if distress is happening, that also impact the psychology of consumption. Actually, inflation also. Yes, inflation also, because prices are artificially increased by the some speculators. So that's why the inflation happens at the higher trajectory, though the demand is not there. Let's have a look at the US markets now. 2 out of 3 US indices ended in the green on Tuesday. Nasdaq added 1.53%, S&P 500 gained 0.85%, while Dow Jones Industrial Average slipped 0.09%. What's your take on the US stock market right now? They seem to be in a bull phase even now, and the US dollar index is still at around 105. Yes, because US economy is reviving actually, and US is recovering from the distress caused by the coronavirus, and increased significantly in the GDP numbers. But during the last 2-3 years, the inflation trajectory is becoming a major challenge for the US economy. Despite so many efforts, inflation remains sticky, more than 3% on the high base also. Despite so many efforts in the supply chain and increasing the Fed rate, which is more than 5%, they are not able to decelerate the trajectory of inflation. As a policy, they're looking to subsidize industry and once again ensure that a business comes to the US, there is employment in the US. You see this policy as a factor as to why there is a bull phase in the US right now? Yes, but they have to control inflation firstly. If they are going to enter in some new policy, but the inflation trajectory must be addressed to address the other challenges of. You see them reducing the discount rate? I don't see in the near future. Let's have a look at the crude oil market. Both Brent and WTI crude were trading in the red in the global crude market today. Brent crude slipped 0.74% to $81.99 per barrel. The US West Texas Intermediate WTI also decreased by 0.87% to $77.82 per barrel when reports last came in. Your take on crude prices, especially with Russia in the background? Arjun, crude prices always remain very, very volatile every point of time. I am observing the crude oil prices since the last 3 decades. They are not stable at any point of time. Their movement, their lows sometimes are $30-40 per barrel, and they goes to $150 and $160. So there is no price discovery in the crude oil prices. But OPEC and non-OPEC, they don't seem to be benefiting from Russia, because Russia's GDP has gone up with their exports. Yes, that is happening. But the crude, I don't see that the crude prices are going up and they will stabilize at the higher level, because the demand is not happening. Global GDP is anticipated at 3.3%. So that will not support the crude prices at the higher level. वर्षों आपको बता दें कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में वायदा कारोबार के लिए सोना आज गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। इस कीमती धातु का वायदा मूल्य 5 अगस्त 2024 के लिए 0.86% की सुस्ती के साथ 71,354 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर दर्ज किया गया। वहीं 5 जुलाई 2024 के अनुबंध के लिए चांदी अंतिम समाचार मिलने तक 2.12% की गिरावट के साथ 88,525 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर कारोबार कर रही थी, और अंतरराष्ट्रीय बाजार में दिन के कारोबार के दौरान सोना 1.37% के नुकसान के साथ $2,322.60 प्रति औंस के स्तर पर था, और अंतिम समाचार मिलने तक चांदी 3.57% की सुस्ती के साथ $29.19 प्रति औंस के स्तर पर कारोबार कर रही थी। एसपी शर्मा जी, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और हमारी शंकाओं का समाधान करने, प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया, थैंक यू। And before we close, a reminder of the headlines. Domestic equity benchmark indices end in the green. Sensex closes at 76,811. Nifty at 23,399. Retail inflation eases to a 12-month low in May 2024, says Ministry of Statistics and Program Implementation data. And US Fed Reserve Bank maintains key policy rate. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye.
This is Akashvani.